So, This hello, existing San, value. how are you? I'm fine, sir. Okay, so where do you came from? I belong to Darbhanga, Bihar, the Mithilanchal region of the Bihar. Okay, so tell me something about yourself. Uh, about myself. Yep. My name is Afshan Ali, and I was born and brought up in Darbhanga itself. I completed my matriculation as well as intermediate from here only, from the Haryanishya school. Post that, I went to Kota for my JEE preparation, and henceforth I did my graduation in Bachelor of Technology in the branch of Electronics and Communication from Delhi, from Jamia Millia Islamia. And after that, this year only, and after that, right now I'm placed with EXL as analyst. And In my college days, I was totally inclined towards the with my graphs and tables and machines and all those things which are happening around that. I was also the part of the clubs, the eminent clubs of my club, like in of my college, like Inactus and Underrated DC, where I get hands-on experience of entrepreneurship from the Inactus. And I was the part of the student-run global consulting firm Underrated DC, where I exited as a project manager, worked over 3 to 4 projects, consulted the startups. So from there, I get a lot of idea about the realm of corporate and business world. Apart from that, I love and it is my passion to participate in case competition and case studies. I've also won the SRCC case study competition. I was the runner-up among the 2000 teams, and I was also in the top 8 team of the social impact consulting competition by IIM Bangalore. Apart from that, sir, my hobbies include watching documentaries, hanging out with friends, and listening to Hindi rap songs. Okay, so your hobby is to listen rap songs, right? Yeah, Hindi rap songs specifically. Okay, Uh, name some of the rappers around. from the Hindi Yep, belt, sir, yep. or From the- Hmm. from the Hindi belt. So obviously, two of my favorites, Divine and EPR. Okay, so why they are your favorite? Any such criteria? Yeah, exactly, sir. Definitely. So the first of all, the reason behind me, the fan of Divine, I'd like to go first for that. Sir, Divine is someone who has created his own mass level audience by his unique voice texture, the way he raps. He represents a whole community. The thing is that the level of depth where he touches the each and every point of the society is impeccable. It is something which is unparalleled. So that is what Divine gives you. Divine is someone which you can play in your car and can listen for a long hour, right? So Mhm. there are verses like in 3 a.m. Like edit karke image tune mera meme bana diya. These kind of things is something motivating. So this is something which really makes someone a Divine fan. Apart from that, Okay. because I'm a bit orthodox in a lot of things, sir. A bit, not because I'm a bit like I'm a bit grammatical person. So, for example, sir, in cricket, I love watching Dravid. So, in the same sense, the reason I like APR is because APR is the Dravid of hip hop. He Okay. knows what hip hop is. He writes hip hop in that way, right? Okay. What actual hip hop is, what syllables are, what multi syllables are, how you are going to play with all those similes and rhyme schemes, these kind of things. Okay. So I like these things also, sir. The real hip hop. So that's why Okay. EPR is my second favorite. Okay. Nice. So you did your graduation in BTech ECE, right? Yeah, electronics and communication. Okay. What is the major difference in ECE and CS? There are a lot of similarities, and the major difference is that, sir, that computer science specifically deals with the software portion of the information technology world, but the electronics and communication in itself deals with the hardware portion as well of the computer system and the software involving with the hardware system of the information technology thing also. They also touch to that portion also where there's the involvement of assembly languages, or there is the involvement of what you can say is like electronic portions. And they also touch the, because communication is there, so they also touch on the part where the bandwidth and frequency and these kind of things are involved. But computer science is specifically towards computer networking. It's all about what is going under the screen, is inside the screen. It's all about virtual things. But electronics is something where there is the involvement at the junction of both. So Okay. that is the major difference I find. So why MBA after BTech? So the main reason that why MBA after BTech was definitely, just as I have told you earlier too, that during my college days, apart from my engineering, the mathematics and engineering I was doing, I get into, I just, for exploring myself, I joined few clubs just to check myself that whether I'm comfortable with these things or not. So that my life is not going to be a monotonous. So
when I joined that club and when I did a lot of activities there and in that club only I get to learn about what are case studies, what are case competition, what are the formulas which are used in the business world. These things I get to know in the those clubs of my colleges. And So what are the formulas you're talking about? Can you name some of them? uh, yeah, the formulas like so basic formulas we everybody of us know, right? Basic the profit loss and these kind of things. But few terminologies like some taxes, I guess some income tax thing was there. The EBITDA thing. I have worked on a EY case study, so they have put a EBITDA thing. So that was the first time I heard the word EBITDA. That it is a earning when you remove the interest, tax, and these kind of things was there. So it is a basic example which I'm giving. Apart from that, sir, when I work for the consulting firms, then I come to know about a lot of things also, like how supply chains works, what is hybrid supply chain networking, how fundraising is done, how money is raised from the market, how marketing campaigns are run. So these kind of things somewhere intrigued myself to refine these skill sets. So I was good at that. I was doing this, and at the same time, sir, in this whole process, I won some case study competition. I participated in them, and that was my I have a eureka moment, and I know that this is something which I love, and this is something I can do for the next 30 years of my life. So I know that these are things which I can do, and for refining these things, these skill sets of mine among a very competitive peers, right, sir? So I want to pursue MBA, sir. That is the thing. Still, this is not very clear that why you want to do an MBA. Like, I understand that the thing facilitates you, but what is the core reason? I did not get that. So the core reason behind me doing an MBA is that, sir, the skill sets what somewhere I lack knowledge in lot of areas. For example, I have solved and I have taken a lot of cases. Sir, I have participated in almost 15 of the contests or 20 of the contests, but I was able to only win one of them. In that also, sir, I was the second runner up. Do you Right. think that after doing an MBA, you can win all of them? I am not saying that, sir, I will win all of them, but definitely that the things which I was lacking, which I realized, okay, these are the reasons that somewhere I'm lacking because I was participating, the people who were participating in those from the premium BU schools. So Okay, I okay, knew just a that, minute, okay, just a these minute. guys are winning. So, how many winners are there? Definitely three, first, second, and third. So Okay. And there are almost 10, 12 top B schools participating in that. almost B schools were there, and they have opened doors for the engineering colleges as well. So yeah, you Okay, can say okay. that. So I can say that there are easily 5,000 people who are from B school participating in that, or let makes that 1,000. So there were 2,000 teams. So if each team has an average of two people, so 4,000 we can say. Okay, there was 4,000 people. Yes, sir. Almost 80% of them were pursuing MBA, right? Yes, sir. From a premium B school. Yes, sir. So in fact, if there is 4,000 students and only three can win that Yeah. winner position, then how can you say that after doing an MBA, you can secure first or second or third position in more of them competitions? Uh, yes, sir. Yes, you are totally correct, sir. But what I have said is that my sample space is bigger, sir. I have said I have participated in 20 contests, but I was able to grab a second runner prize in first contest. And it's not about the contest thing. As you have asked me that why MBA, so I am just telling the eureka moments or the sparks which led me towards this path. The main reason I'm trying to do MBA is because definitely I want to refine these skill sets, and apart from that also I have that entrepreneurial skill inside me, which I think that I have done in the research and development department of some startups and all. So from that, all these things, sir, I have comprehended that somewhere if I can find people which are more relevant to these, right? Because I was in engineering college, everybody was doing tech. I know tech at some extent. I'm not a maestro of tech, but I'll say that I know tech to some extent. But what about the business thing? So for that aspect of that and the peer group, the learning group, the environment, which I'll get at a B school, it's not about the case competition also, sir. The Okay. environment, the professors, the curriculum, the rigorous thing going on, these will train me for the upcoming episodes of the corporate arena. Okay. 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 So, did you have done some internships or anything? I can see in your resume that there is a growth intern at Group Cool. Yeah, this was a startup by my senior. This is a digital solution of education. So what they have launched is that this is a
one a very unique kind of startup which they have launched, and we have raised money from Jasani Ventures, also from US, for these. So I was a part of this organization from very starting, and but after that I did a intern with them as a growth and marketing intern. And when they have established, consolidated themselves as a physical body, then they have launched their app based platform known as Padhai. So when they were launching that app, so in that whole process we were involved, that how the designing will be done of the app, what are the courses which are going to be put there in that order, and how we are going to market that, how we are going to increase the impression of that app. So we have worked on these strategies in that internships of three month in that internship of Okay. 3 months. So who is the CEO or founder of this Gurukul? The founder of Gurukul is Adil Miraj, and the Where CEO is he's from? he's from he has done, he's also from Bihar, from Siwan district, and he has done his civil engineering from IP University. Uh, is he an MBA? Uh, no, he's not an MBA. Uh, Then how can you say that after doing MBA only you can pursue entrepreneurship or something like that? yes, sir. Sir, I have an answer for that, but yeah, I'll say you. So definitely, I am again saying that there are people like Nitin Kamath who is 10th pass and he's running a 20,000 crore business. So definitely, but how many Nitin Kamaths are there? This is the question, Okay. right? Exactly. Why there is a reason that JBIMS is known as the CEO factory of India. There is a reason behind that, right? Okay. Something is a factory, but there is an individual. Right. There are cases. Yes, you can tell me that why you can't be the rare of the rarest. Yes, I want to be the rare of the rarest. Right. But I want to have those skill sets with me as well, so that I can't struggle to that level in market, that I have to spend 25 years of my life, like Kamath, what Kamath has done. I want to do that in 5 years. And I think that the peer network I'm going to get from that B school is going to do that. Or the Okay. level of curriculum they are going to tell is going to do that. And apart from that, coming from the Gurukul perspective also, sir, there were a lot of things in their organization, which I personally found that was lacking. But Mhm. as an intern in a particular department, I never thought that I should. I have thought that I should tell the CEO, but I think I was not at that position that I can consult them. They might have said, "Ki he is the intern from a third year student from BTech, and it's like that, maybe or maybe not." So are you saying that you do not have the courage to speak to a CEO or a manager for the downfalls of a company or for loopholes or anything like that? I have the courage for saying that thing, but at that point of time, I think in the very nascent phase of my life, I don't know. I was not sure that how to put this thing into the words, and what is that. Definitely coming to that is what is the corporatorial or the formal way to address this issue. Okay. There may be possible, there was the possibility of that maybe I could have said that this is not going to work, how you will find things, and these kinds of things, but I don't know the how to put this. But now I can tell him that now, after few times, now I can tell that what were the merits and demerits, definitely. Okay. So how your degree in ECE will help you in MBA? Definitely, sir. So coming from a electronics and communication background, being an engineer, definitely maths is a plus for me. And that mathematical skill and number crunching is definitely going to help me, because data is something which is going to the new oil. Now the things are not going to run on just simple PPTs and colorful charts, right? It is going to be the real number based game totally, where you have to present the tables, where you have to do things at its pace, where you have to integrate the technology at every level, right? Which requires somewhere the techies to come into this field and to lead this field. And that's why I think that that's how my electronics and communication degree will help in this. And because I have a portion of subject from communication also, so I have a knowledge that how the system of communications work, right? How the system of communication work, what is going to be in the new phase, what technologies are going to come in the future, or what technologies are going to come into the new phase, what are the investment which a particular company, if I'm going to the part of company, can make, or what are the things they can change accordingly. Okay. So I think this is how So my what are the things coming in future in communication? Name few.
Sir, in communication thing, sir, the main thing which is going to come is, so Wi-Fi is there, sir, but I think there is it's already there. It's very old, but I think a very bigger network is coming, where the concept of the wiring system will totally be outdated, obsolete. They are planning on making some satellite-based communication system, where what they're going to do is that what Tesla has thought about the same thing about magnetic induction, that there will be a tower, and from the tower the magnetic induction will pass through all the things, and the light will come there. We don't need wires. So on the same technology the communication society is going to work on, the scientists are going to work on, that the wires are going to be the obsolete, and from the satellite itself there will be a network of, I sorry right now I'm not getting the exact name of that technology which Musk has allowed the Ukraine to use, and he's not he's working on that. Sorry, sir, I'm not getting that name. So do you think that this technology can beat the speed of optical fibers? Uh, uh, Like Sir, right now, optical fibers are used to yeah, transmit definitely, signal. sir. Optical fibers, I know they follow the total internal reflection technology to send information from here to there, and they are lying all over the Atlantic and Pacific. But I have not. Sorry, sir, I'm not sure right now, cause definitely I'm thinking it in a bit physics way, that if something is coming from space and yeah. So I think, sir, maybe this is going to be faster. Definitely, if the efficiency is going to be increased, so definitely it is going to be faster, because in total internal reflection, if we are considering the light to be wave as well as particle at the same time, then the particle is facing friction also, and it is traveling a path inside the solid. So somewhere I think, sir, with this logic, I believe that definitely space one. But I'm not sure, sir. Maybe there might be any function or maybe parameter in those wave equations which can change some scenario at that level. So I don't know, but with the physics knowledge of mine, I can tell this. Okay. So you are from Bihar, right? Yes, sir. Darbhanga. Who is the current governor of Bihar? Sir, one second. Governor, sir. Hmm. Sorry, sir. I'm not able to remember right now. Who is the current CM of Bihar? It is Nitish Kumar. How many times Nitish Kumar have taken the oath for being a CM? This is the fourth time he has taken the oath. No. Third time, sir. He have the record of taking the oath for the maximum time for any CM. More than more than that Odisha one also. Yeah. Who is the CM of Odisha? Patnaik. Full name? Naveen Patnaik. Yes, got it. Okay. So you are from Darbhanga, right? Yes, sir. So name few places in Darbhanga where one can visit. In Darbhanga, sir, there is definitely the forts of Khandwal dynasty, the Raj Darbhanga, and there you can visit the Nargona Palace, which the building itself is the first earthquake-resistant building of the whole India. Okay. That nobody knows, but that is something which I believe that government should also focus to popularize. Apart from that, there is a museum, the Chandradhari Mitla Museum, which consists of the relics from the Mahabharata period into that museum itself. So, because Goddess Sita belongs to Sita Mari, which is just in the region of that Mithilanchal. So there are relics from the Mahabharata and Ramayana period which into that museum, and the different dynasties which have ruled there. Apart from these two places, there is Ahilya Sthan also in Darbhanga, sir. Ahilya Sthan is basically a very holy place, cause that place holds that place holds its importance because it is a very important place in Ramayana, because Lord Ram crossed that place, and it is the whole story around Gautam Rishi and Ahilya. Those things has happened here only, and they're the fourth. So basically, it is, and the most popular one is the Shamamai Mandir, which I think is the attraction of my district. So it's a bit religious district, sir, Yeah. and people are so much into that. So these kind of things, we still carry that legacy of kings and
to a bit, and those things, religiosity. Apart from that, on the modern version, the Gen Z and for the millennials, definitely the airport is into the scene, and due to the airport, there are a lot of cafes, and those a bit 10% vibe of Khan Market is there also. So we can go there to hang out also, sir. Okay, so how many airports are there in Bihar? You have any idea? Yeah, there are three airports in Bihar. So first is in Patna, which is Jayaprakash Narayan. Second is in Darbhanga, and third is in Gaya. Okay. Gaya, cause So, the Buddhist come there, they're from Japan and China, so people, Nitish Kumar has made airport there. so just a hypothetical situation. You are getting I am Bodh Gaya, and you are getting IAM Nagpur. Which will you take and why? Yes, sir. Yeah, definitely. Definitely, Bodh Gaya is something which belongs to my homeland, Bihar itself. But definitely, I like to explore the people and the land of Chhatrapati also. So I would like to go out of the state and know new people, make new connections. And as Mumbai, which is the financial capital of India, is very near to Nagpur, so I think the opportunities for me to the opportunities for me is much more in comparison to both Gaya. So I'll choose I am Nagpur for that reason only. But I believe that in future, both Gaya, under the guidance of government and the bureaucrats, will evolve that in that place and will definitely become a commercial capital also, and definitely things will improve. So Okay, just replace I am Nagpur with I am Sinamore and answer the same question. Sirmaur. So Sirmaur is in Himachal Pradesh, right, sir? So yeah. So definitely, sir, the same logic I'm gonna put here also. That somewhere, sir, Nagpur is a city, and Sirmaur, in comparison to Nagpur, is not that much popular in popular at the level of that, and definitely the connectivity with Mumbai and Pune. It's But really Delhi is not very far from I am Sinamore. Uh, Delhi is not very far from I am Sirmaur. Sir, I'm confused that if Sirmaur is in the southern portion of Himachal or the northern portion of Himachal. If northern portion of Himachal is there, then the distance between Sirmaur and Delhi is larger than the distance between Nagpur or Pune, I guess. To Okay. be very honest, sir, I am, to be very honest, a bit confused, but definitely I will look for the definitely I will consult some seniors and the peer groups of mine. And the things I have told you earlier also, that the things like rigorous curriculum and the clubs and societies, and the learning environment, the whichever matches my temperament and resonance, definitely I'll Okay. join that college. Okay. So you are not looking to the CKC college average package offers. No, sir, I don't. I'm not looking at the average cities, CTCs, or these kind of things in the college. The reason behind that is the average is decided on a different level, and the median is decided on a different level, and top 50% or bottom 50%. These things doesn't matter if you're performing in that college. That doesn't matter. So definitely, as everybody say, if I have skill sets, if I have knowledge, definitely I'll get what I was destined to get on the Okay. basis of my skill sets and hard work and knowledge. And I am here to uh, the 2 years, upcoming 2 years of my journey is not about money itself. The reason behind that is that for 99.9% of the people, masters is the last educational journey. It is the official end of your childhood. And I want Okay. to, yes, after, and I want to learn as much as possible from these organizations, these institutions and their So you are professors. paying 25 lakhs or 30 lakhs fee just to gain nothing as a monetary purpose or in a monetary way. Uh, Definitely, we both know that there are monetary benefits, and that's why they are also taking 25 to 30 lakhs, because they are reflecting that thing. But to be very honest, I believe that in this world of hard-driven capitalism, everything is not materialistic and monetary. Something is done for itself, and it's not only about the money thing. After some time, money doesn't matter, because Okay. it also has a limit, and people have their limits. As Mahatma Gandhi has also said that there are enough resources on this planet
to cater the need of everybody, but not to cater the greed of everybody, right? So I know that money is not something. What something is the experience which I'm gonna have, the friends I'm gonna make, the people, the competitive brain of these countries with different ideas. Though being an engineer, I'll see the guys from the SRCCs who are coming from commerce. I will get to know that how they think. I will get to know that how a person from a fashion technology background thinks, how a person from a design field thinks. So these things intrigues me, and that's why I'm coming to the B school. To be very honest. Okay, so if I will tell you that I am Ahmedabad, and I am giving admission at cost of 40 lakhs, you will gain all the benefits without even giving appealing for CAT or GDPI anything. I am giving you direct admission at the cost of 40 lakhs rupees. But we will not assist you with your placements. Will you join us? Sir, in the first statement itself, I find some integrity issues. There is honesty involved because I'm paying you 40 lakh rupees and you are for that extra 15 lakh to. No, no, just thought that there is nothing illegal or anything like that. There is just a scheme, official scheme by IIM Ahmedabad, that they will give 5 seats to people at 40 lakh rupees, and they will not give them the placement support. This is official. There is nothing unauthentic or unethical. Sir, definitely I'll not accept this scheme. The reason behind that is not the placement. The reason behind that is the I want to. I have prepared this hard. I'm a hardworking guy. I want to face the process. I want to meet the people in the process itself. Okay. I don't want to meet the people in the campus itself. I want to meet the people in the process itself. I want to sit in that group discussion. I want to listen that I want to know from the beginning that what my peers are, Mhm. how they are going to think. So I that experience of writing essays on topics and that experience of having group discussion, that experience of getting me getting questions from that end for 40 to 45 minutes or I don't know how much time. So that is something which I want, and that's why I will not choose this scheme, sir. And regarding placement stuff, as I've already said, that everything is not money. If money was everything, there are a lot of things that people can do apart from MBA also. There are people who are doing that apart from MBA also. So MBA is not only for that thing, I believe. Okay. So, what are the current news in current affairs which happens in past few days, and you think that that will impact the Indian economy at a large? Yeah. Just give me a second, sir. So, Sure. gather. Sir, in the past few days, I would like to apologize because I'm not able to gather the exact information from the past few days. But I think, sir, there is a technology which has been in discussion from a long time, which government is aiming to work on, is ONDC Mm. in past few months or something, which is I think is going to be a game changer. Open network digital commerce, which is going to be a game changer for for MSMEs to the grassroots level of people in India. Because definitely there is a government backing, so there is a security with their business as well. So I think this is going to change the scenario, just like the UPI has changed the things. So I think this is something which I can right now gather, and Okay. yes, sir. हम्म So what are some things in current happenings पैसे तो निकालो मेरे साथ which can affect Indian economy in a negative way? पेटीएम लगा उससे एटीएम वो पैन कार्ड से निकल जाएंगे Sumit, can you check if there is some issues? Sir, sorry, sir. हम्म, If you can come again. Yeah, hello. Yeah, yeah. Yeah. I was asking that what are some things happened in recent days which can harm Indian economy in a negative way? Sumit, can you unmute, mute everyone else?
Sorry, just a second. Guys, please be on mute, everyone else who is not speaking. Okay. Yes, sir. So Yeah. you're asking that what are the some news which is not going to affect the nominal GDP? That is going to affect Indian economy in a negative way. Indian economy in a negative way. Yeah. Uh, the recent news or the things. Okay. So sorry. Yeah, you can continue. Sir, presently I'm not aware about a lot of things which are going on. I must brush up my current affairs, I know. But Okay. somewhere from my brain, which I think is that some news have been coming right now, is that like Paytm has laid off 1,000 employees, and 30,000 Google is gonna fire. I don't know if 30% of that is from the Indian market. So this is a large number. So I think in the Indian economic sense, unemployment is definitely going to increase because Okay. recession is in the pay. People are companies are cutting off the employees. So definitely these things are going to happen with the economy. The employment will be the issue for the government, and Okay. the introduction of generative AI will definitely hit the different domains of work field in India, because people are not ready for that at a very greater extent, right from graphic designing to website designing to Android technology, because Mhm. generative AI is something which is somewhere I believe is I personally have read things, and I personally believe that how people are drawing parallel that when computer was introduced in India, people thought that it is people thought that it is not it is going to affect a lot of jobs and all, but actually it created a lot of jobs in banks. But I find there's a fallacy in that. The Okay. fallacy is that the computers were the machine itself which need people to operate, but the generative AI itself is a self-operative thing. This is the issue. It just need a single person, or a person who is well aware about a generative AI thing, and he can do those things itself. We don't need to hire a lot of people. And the way they are working on this technology after some time will not even need a human assistance. They can do things itself. So this is somewhere the people will definitely lack, and I think the drawing parallels are totally wrong. So government should definitely think about the universal basic income thing, which Musk has said about. This is going to be a dire need of the people's situation in upcoming 15 to 20 years, I believe. Okay, And this just is a quick question. What is the square of 11? 121. Okay. So last few questions, you have to answer that rapidly. Okay, Who sir. is the president of India? Draupadi Murmuru. Vice president? Jagdeep Jhankar. Sorry, I'm Dhank. Who was the last PM before Mr. Narendra Modi or Sri Uh, Narendra Modi? Manmohan Singh. Okay. And from which party he comes from? Indian National Congress. Okay. So do you have any idea about the new term in politics, India? INDIA? What is this? Sorry, sir, I was not able to hear you. Are you aware of that new term which is now, I guess, famous in politics? The Yeah, new yeah, yeah. Definitely, political the leader, the opposition has. INDIA. Yes, sir. The opposition has made a coalition, and they have called that coalition India. And on that note, the ruling government party is actually setting something that they are definitely, they both are opposition, so they will oppose each other. So they have come with this argument that these are I dot N dot D dot I dot A. This is not India. Bharat is what it is, right? India is something which is foreign, which has come from the Indus River. The Greek people tell us, and these kind of things. But I think these whatever these people are doing, but the constitution itself in the very first article have said this is the land of Bharat, which is India itself. So Bharat and India both are mentioned in the article first itself. So there is no point debating and arguing. So it is just for the sparkles of media outlets, I think, nothing else. So just a last question. Who is the entrepreneurship or MSME Minister of India? Entrepreneurship and MSME Minister of India. Sorry, sir, I'm not able to.
Okay, so thank you, Afzan, if I'm getting your name right. Yeah, So, either okay, we are done with the interview. So, how was your experience? giving this interview. Yep. I think, sir, I was a bit fast when I was telling things. I think I should need to slow down. I Mm-hmm. somewhere found myself more informal Mm-hmm. than formal. But to be very honest, sir, I find formality in every circle to be robotic. I don't know why it is not natural. So maybe I will Okay. not change this. Definitely, I don't know if I'm going to get select or not. So, but still, I'm not going to change it because this is me, my natural face. This is how I am. Why I'll change this, right? The third thing is I need to brush up definitely the daily based current affairs and their impact because somewhere I lack. And cause I'm coming into a business sector, I know about the ministers and all the people involved, all the stakeholders involved to a good extent. So this is the thing. So, I will give you a quick review of your whole PI. Yes, sir. Sure, sir. So, okay. So, the first thing, personal awareness, that is good. You talk about that your hobby is collision rap or rap song or that. So, you were defending yourself well there. So, that is a good thing. Coming to academics, like you are forcing your BTech, EC, and technology think too much. That will sound like you are more interested in that. So a panel does directly ask you why do you want to be an MBA? इतना इंटरेस्ट है तो वही कर लो ना, यहाँ क्यों आना है? Why not MTech? सो Yes, sir. उसको थोड़ा सा कम करो, वो थोड़ा ज्यादा ओवर लग रहा था कि उसमें ही पूरा मन है सब कुछ करने का। Mhm. वर्क एक्स के बारे में कुछ पूछा नहीं, इंटेंसिटी के बारे में पूछा था, वो अच्छा था। बट अगेन वो चीज जो आप बोल रहे हो वो आपके ही आंसर को कहीं ना कहीं डिनाई कर रही है कि आप वहां बोल रहे थे कि आपको एमबीए करना है ये करने के लिए, और व्हेन यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ योर ओन इंटर्नशिप कंपनी सीईओ की उसने तो बीटेक करके ही कर लिया। तो वहाँ आपने डिफेंस सही किया था, ऐसा गलत कुछ नहीं बोला। बट दैट कोई भी आप ऐसा आप नहीं बोल सकते सीधा कि 99% लोग जो एमबी आपने दो फैक्ट दिया था ना कि 99% समथिंग नहीं कर पाते हैं लाइक दैट। सो दैट इज ट्रू फॉर एमबीए एज वेल। यहाँ एमबीए में हर साल 20,000 अच्छे ग्रेजुएट होते हैं, और कितने ही सीईओ बनते हैं या कंपनी फाउंड करते हैं। सो सीधा ये बोलना कि एमबीए करके ये करूंगा इज नॉट सच, मतलब सही, वो सच भी नहीं है। सही तो बात की बात है, वो सच भी नहीं है। सो उसको थोड़ा सा देखना। जी सर। जीके भाई गोल है। जीके का कुछ पार्ट जो कॉमन है वो ठीक है, बाकी अगर भाई बिहार का गवर्नर नहीं पता है तो बिहार से कैसे होगा? Definitely, I should brush up. Definitely, sir, I should brush up. I was also like, I've heard his name a lot of times, but I हम्म। दिमाग में भी क्रॉस ही नहीं हो रहा था। और करेंटली चेंज भी हुए हैं आई गेस, सो न्यूज में भी था। व्हाट सर? करेंटली गवर्नर चेंज भी हुए हैं, सो हाँ न्यूज सर, में आई एम था। नॉट रीडिंग न्यूज एक्चुअली कुछ दिनों से। भाई पढ़ लो यार, वो बहुत जरूरी है। यस सर। करेंट अफेयर्स इन जनरल ओवरऑल अच्छा था, पर अगेन मतलब लग रहा था कि डेप्थ में नहीं पता है, बस टॉपिक पता है, उसके ही आसपास कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वो डेप्थ में पता होना चाहिए। ओके सर। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग इज गुड, बट अगेन ना द थिंग इज, आप आंसर कर रहे हो जो आपके जोन में है तो आप काफी लंबा आंसर कर रहे हो उसका, लाइक बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, और जो आपके जोन में नहीं हो तुरंत खत्म हो रहा है। तो ये दिखा देता है पैनल को कि आपका जोन कहाँ है। और एक बार वो आपका जोन जान गए फिर वहां वो पूछेंगे ही नहीं। उनको पता है कि दैट इज जोन, आपको पता है क्यों पूछे आपसे। सो दे वांट टू एक्सप्लोर यू इन डिफरेंट जोन्स। तो वो मत करना यार कि मतलब देखो, या तो सारे आंसर लंबे बोलो। अगेन लंबे बोलना कभी अच्छी बात नहीं होती है, सुनने वाला बोर हो जाता है। तो टू द पॉइंट क्रिस्प इज सजेस्टेड। अगर लंबे बोल भी रहे तो सारे आंसर भी लंबे रखो। ये वो हाँ सर। डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए कि एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, क्योंकि इसको यहाँ पता था यहाँ नहीं पता है। तो दैट इज द थिंग अगेन, लंबे नहीं बोलने चाहिए, छोटे ही बोलने चाहिए। आपको लगता है कि आपका पर्सनालिटी वैसा है, आप पुल ऑफ कर सकते हो, तो सारे ही फिर लंबे बोलो। और या तो फिर क्रिस्प। हाँ, क्रिस्प ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर। लॉजिकल थिंकिंग इज गुड, अगेन थोड़ा लग रहा था एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो कभी कभी। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे वो ऑप्टिकल फाइबर वाला, तो ठीक है, लास्ट में आपने लास्ट में बोल दिया कि मे बी नहीं हो पाए, पर तब तक आपने नहीं बोला था तब तक थे कि हाँ हो जाएगा यार। फिर लास्ट में आपने सेफ प्ले किया, नहीं नहीं मे बी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो थोड़ा वो बैलेंस करके चलना है खुद को कि एकदम एक्सट्रीम कहीं नहीं जाना है। आपने अपने स्टेट के बारे में अच्छा बताया, वो काफी इंटरेस्टिंग था। अगेन अगर इतना अच्छा है तो आप उसको मेंशन करो ना अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में, जब चालू कर दो खुद के बारे में बताना। तो आई केम फ्रॉम द प्लेस विच इज बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। तो ये काफी अच्छा है, कैचिंग लाइन होगा स्टार्टिंग में ही। सो वो खुद से पूछेंगे किस किस स्टेट से आते हो, कुछ और बताओ। तो आपने वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया है, वो और अच्छा हो सकता था। अगेन आपका
टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर काफी लंबा था, उतना लंबा नहीं होना चाहिए। लाइक एक पॉइंट के बाद बोर हो गया था सुनते सुनते, ठीक है बस करो, खत्म करो यार। तो वो यस सर। शॉर्ट क्रिस्प और जो मेन चीज है वो होनी चाहिए। हम्म। इंटरपर्सनल स्किल्स गुड, बट अगेन यार देखो, इनफॉर्मेलिटी तब तक अच्छी है जब तक उससे सामने वाला का ईगो हर्ट ना हो, वो ऑफेंड ना हो। तो ओके। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा फिक्स एक्सप्रेशन देना लाइक कि मुझे सब पता है, यही होगा यही सच होगा, दैट इज नॉट राइट। सो हम्म। थोड़ा सा कंट्रोल करो, मे बी एक आध पीआई के बाद आप यूज टू हो जाओ कि मतलब ये एक लिमिट है, इसके आगे नहीं जाना है। तो वो श्योर। ठीक है, अच्छा था, बुरा नहीं था। लाइक बट हाँ, और अच्छा हो सकता था। बी स्कूल अवेयरनेस जो ने क्वेश्चंस किए बी स्कूल के बारे में, देखो एंड ऑफ द डे उनको पता है कि आप पैसे के लिए आ रहे हो, और अगर आप नहीं भी आ डेफिनेटली। रहे हो तो एज्यूम करेंगे पैसे के लिए आ रहे हो, क्योंकि हम्म। बैच के 390 बच्चे, बाकी जितने बच्चे हैं वो सब उसके लिए आ रहे हैं। सो आप अकेले आके बोलोगे कि नहीं मैं तो पैसे के लिए नहीं आ रहा, दैट इज नॉट लॉजिकल ना। यू आर पेइंग 25 lakhs फी, और आप बोलोगे नहीं पैसे से मतलब ही नहीं है। और यस। एट दिस एज, जब आपके पास मे बी अगर आप खुद अंबानी के बेटे हो तो दैट इज मेक सेंस कि चलो कोई नहीं, पैसे हैं पहले से मतलब नहीं है। तो वो चीज सच नहीं है तो वो पकड़ लेंगे, पहली बार पकड़ लेंगे वो। दूसरी बात लगेगा कि नहीं सच तो नहीं बोल रहा है, इवन आप सच बोल रहे हो। तो एक पॉइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ पैसे के लिए तो ऑब्वियस आ ही रहा हूँ, पर ये सारी चीजें भी चाहिए मुझे। एकदम से बोलना कि पैसे के लिए नहीं आ रहा हूँ, इस मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहुत लोग लास्ट में ज्ञान दे के आएंगे कि नहीं भाई मुझे सोशल वर्क करना है, ये वो पैसे के लिए नहीं आ रहा हूँ, वो लेंगे ही नहीं भाई, मत आओ यार। क्योंकि उनको बच्चे चाहिए जो आए प्लेसमेंट के लिए, उनको प्लेसमेंट रिपोर्ट खुद का बनाना होता है। उनको दिखाना तो सारे बच्चे प्लेस हो गए अच्छे प्लेसमेंट के साथ। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसा आ रहा है जो प्लेसमेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए एक बर्डन हो सकता है। ट्रू हम्म। फॉर मेनी कॉलेज, उनको दिखाना है कि 100% प्लेसमेंट हो गई है। तो सर आई विल से ब्लंटली कि yes I'm coming for placements, यू or कैन I से will twist नॉट around. ओनली कमिंग फॉर प्लेसमेंट्स। Oh, so I'll say that definitely, sir, I'm looking for a better future from here या in दैट्स वेरी monetary गुड। terms, but that is not the only truth. या उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकता हूँ, राइट? हाँ, आप खुद सोचो ओके। ना ज्यादा लॉजिकल कौन सा लग रहा है आपको। समझ गया मैं। या दैट्स द थिंग। अगेन, आप एक बार के लिए आईआईएम बोध गया छोड़ रहे हो आईएम नागपुर के लिए, और सिरमौर के लिए फिर नहीं छोड़ रहे हो। तो आप रैंकिंग पे जा रहे हो, दिख जा रहा है कि क्योंकि वो नीचे आता है आपने छोड़ दिया। आप और ऐसा है ना कि हिमाचल में काफी इंडस्ट्रीज हैं, ओके। और दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, और इंडस्ट्रीज बिहार में बहुत कम है, और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत दूर है बिहार। सो वहाँ आपको सिनेमा बोलना चाहिए था लॉजिक फॉलो करते हुए, अगर आप जिस लॉजिक पे आपने नागपुर को लिया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो जिस लॉजिक को फॉलो किया उसको आगे भी कंटिन्यू रखना, ये नहीं कि उसके लिए वो था इसके लिए ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंकिंग और एनीथिंग। सो ये एक चीज थी। एमबीए अवेयरनेस में ज्यादा गया नहीं कि एमबीए क्यों करना है, पर जो जो आपने बोला ना वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया था। एक पॉइंट के बाद मुझे शॉर्टकट। सुनने का मन नहीं था कि क्या बोल रहे हो आप। और अगेन उसमें लग रहा था कि आप अभी खुद के करेंट रोल से, करेंट प्रोफाइल से ज्यादा खुश हो। लाइक टेक्नोलॉजी के बारे में आप हर चीज में बोल रहे थे, इस यही लगेगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। तो वो देख लो एक बार। ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना, सिंपल क्वेश्चन क्यों करना है भाई, एमटेक कर लो यार इसी में, हम्म। क्यों आना ही एमबीए करना ही क्यों है। तो वो हम्म। हर एग्जाम्पल में लाइक करेंट अफेयर्स में भी आपने एक आध बोला वो टेक्नोलॉजिकल ही था। हाँ, लाइक जैसे ओएनजीसी कि में। वेरिएंट ऑल तो काफी ज्यादा जा रहा है टेक्नोलॉजी, उतना नहीं जाना चाहिए बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना एमटेक कर लो भाई, क्यों करना है एमबीए, जब इतना ही इंटरेस्ट है इतना ही अच्छा लगता है, तो हर कुछ में वही बोल रहे हो। तो थोड़ा इसको इंक्लाइन करना टुवर्ड्स एमबीए, टुवर्ड्स मैनेजरियल थिंग्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी इज अच्छा था, गुड, मतलब नो कंप्लेंट्स है। अगेन एटीट्यूड के बारे में बात कर ली मैंने, तो आपके लिए अच्छा है तो अगेन आई विल नॉट से कि आप चेंज कर लो। बट द थिंग इज ना कि एक हद तक अच्छी लगती है जब तक वो पोलाइट फील हो। पैनल में ऐसे लोग बैठेंगे जिनका एज 50s होगा 40s होगा, वो हाँ। आपको एक बार में अगर चढ़ा लिया नजरों में कि नहीं ये क्या कर रहा है, तो नहीं लेने वाले हैं इन एनीवेज, आप कितने भी आंसर करके आओ। क्योंकि उनके बच्चे चाहिए जो लाइक अच्छा बिहेव करे इन द बी स्कूल। भले आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो इन जनरल, पर आपको वो 20 मिनट में ही जज करने वाले हैं। तो उस पर ध्यान रखना। श्योर। बाकी ओवरऑल इट इज गुड। आई विल स्कोर 7 out of 10 फॉर दिस पीआई। थैंक यू सर, आई विल टेक ऑल द पॉइंट्स एंड नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क ऑन दिस. यस, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क। फ्रॉम माई साइड इट इज लाइक, मुझे थोड़ा मैं पूछ ही लेता हूँ मैं कन्वर्जन को लेकर ही कि मतलब कन्वर्ट होगा कि नहीं. मतलब सर मेरा 98.48 है एंड आई एम अ जेम एंड वर्क एक्स जीरो है अभी. सो जेम। बिकॉज राइट द थिंग इज कि कैलकुलेशन के हिसाब से फिर वर्क एक्स जीरो हो जा रहा है और जेम हूँ सर. और अकैट्स ठीक है 95 83 85 है और थोड़ा ट्वेल्थ में डाउन है.
सो आई वॉज थिंकिंग ऑन 98.48 और DILR का जो परसेंटाइल है 77.88. हम्म। सो डेफिनेटली आई एम गोना गेट द कैप कॉल्स, ये तो पता है कि कैप कॉल्स आएंगे. ओल्ड राइम्स आई डोंट नो, मे बी नॉट व्हाट दे. मे बी कोझिकोड है, मे बी नॉट। हाँ, मे बी नॉट, बट कैप कॉल्स आर शॉर्ट, राइट सर? आर यू क्या श्योर सर आएंगे, कैप कॉल्स विल कम? अगर कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं तो आएंगे, और आई एम शिलोंग भी आ सकता है। सर 98.48 इज टोटल. रेस्ट क्वांट इज 99 मैक्सिमम प्लस. क्लियर हो रहे हैं सारे। DILR में सर 77.88 है, बस उसमें 77.88 है. तो मे बी कैप में भी एक आध कॉलेज के लिए एलिजिबल ना हो, पर इन जनरल मैक्सिमम के लिए होने चाहिए। अच्छा, और सर इस जो इंटरव्यू में जो आपने चीज़ें बोली हैं, और उसको अगर रेक्टिफाई कर लिया जाए, हाँ। मे बी आई एम गिविंग माई 100% एंड ऑल, हम्म। तो सर व्हाट आर द चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लेट्स से नागपुर और विशाखापट्टनम? द क्योंकि थिंग सर इज ना मुझे ना कि ये जेंडर एवरी इंटरव्यू एकेडमिक्स हैव अ एवरीथिंग. डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपके किसी का भी इसमें से कुछ भी ना पूछा जाए, कहीं और ही चले। तो अगर हम्म. आप 10-12 मॉक पीआई देते हो और उन सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर लेते हो, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस है। क्योंकि एक पीआई में, लाइक मैं वर्केक्स के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, उधर गया ही नहीं। हम्म. अगेन एकेडमिक्स में भी डेप्थ में नहीं गया कि क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्यों पढ़ा है। काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई है, तो अगर वहाँ आ गए तो। सो अगेन 7-8-9 मॉक पीआईज दो, वहाँ जो सारे पॉजिटिव हैं इम्प्रूवमेंट्स, वो सारे करने के बाद इट्स पॉसिबल। Sir, regarding WorkX, I have to also say one thing, sir. Right now, sir, the joining date is extended due to ओके decision mind. So it's like under training. ओके ओके। So right. So वो चीज़ अब भी नहीं बोलूंगा तो सही रहेगा WorkX वाली पार्ट, या फिर मुझे ये कंफ्यूजन था सर कि मतलब मुझे ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट आई एम employed at EXL as an analyst, but my date of joining has been extended. तो क्योंकि अगर मुझे आपको लग रहा है सर ये किस चीज़ कहीं तरीके की नेगेटिव ग्रामर का इम्पैक्ट मतलब ना सही डाल दे. पड़ेगा? वो कहीं ये ना सोच ले कि अच्छा तुम इसलिए आना चाहते हो क्योंकि डेट ऑफ एक्सटेंड हो गया है, तो चलो MBA कर लेते हैं, ऐसा. और या फिर अगर डेट वो चीज़ मुझे डर लग रही है, वो बोलेंगे नहीं कि तो फिर मत फिर बोलो एक यार, साथ. क्योंकि अगर उनको है कि एमबीए करना ही था, इतना लॉजिकल था, तो फिर जॉब लिया ही क्यों? एग्जैक्टली कि सीधा करता, हाँ। तो मैं बोलूंगा कि तो हाँ, हाँ सिंपल की तो नहीं आप है. ऐसा बोल सकते हो कि कैंपस प्लेसमेंट हुई है आपकी। हाँ हाँ, कैंपस कैंपस प्लेसमेंट हुई सर. तो बोलना कैंपस से कंपनी आई थी, मैं इंटरव्यू में बैठ गया था और लकीली मेरा निकल गया, बट बिकॉज एमबीए करना है मैं ऑफर लिया नहीं। हाँ, दिस इज परफेक्ट. और सर सिंपल। फिर अगर समर प्लेसमेंट्स के टाइम, लेट सपोज समर प्लेसमेंट्स के टाइम, क्योंकि EXL है और मुझे मतलब किसी आई एम लखनऊ के सीनियर ने बोला था दैट इफ यू आर नॉट वर्कड, लेकिन अगर तुम अपने CV में EXL को मेंशन करते हो दैट यू हैव गॉट दैट ऑफर लेटर एंड यू अटैच दैट, मतलब यू हैव दैट ऑफर लेटर विथ यू, राइट, तो दिस विल इम्पैक्ट. तो अगर मैं वहां झूठ बोल दूं पैनल पे कि हाँ मैंने नहीं लिया था ऑफर, बट समर इंटर्नशिप्स के टाइम अगर मैं थिंग अपने इज ना, CV पहले समय में, इंटर्म से पहले आपकी जो सीवी बनेगी वो प्लेसकॉम वेरीफाई करती है। तो उसमें वो तो नहीं बैठते ना जो मेरे साथ उस दिन पैनल पे बैठे होंगे कैप के टाइम पे या कोई भी इंटरव्यू के नहीं नहीं टाइम पे. नहीं, वो नहीं, कॉलेज जाने के बाद हम्म. प्लेसकॉम वेरीफाई करती है कि आप, और अगर ऐसा, आई डोंट थिंक मे बी आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दिखा पाओ कि ऑफर मिला था, पर जॉब एक्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा वो, कि आप जॉब किया ही नहीं है, तो फिर जॉब एग्जैक्टली एक्स वो, हाँ, तो आएगा मेंशन नहीं। करना का कोई मतलब नहीं, वो ऐसे कहीं पे अलग से मुझे मेंशन लगता करना नहीं होगा या मेंशन फिर. कर भी सकते, क्योंकि सीवीज में ऐसा कुछ भी नहीं भरते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है, उसमें हम्म. जो चीजें आती है वही भर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि देयर इज स्कोप ऑफ मार्जिन का भर दो। मे बी आप इंटरव्यू के समय बोल सकते हो कि हाँ ऑफर मिला था, बट आई डोंट थिंक सीवी मार्जिन होता है ये फिल करने का। और सर एक कंफ्यूजन और है मुझे, मतलब ये दोनों रिस्पेक्ट में है, एक तो IIM के इंटरव्यूज के लिए और अगर गया तो समर इंटर्न के लिए. करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच का जो वो डिफरेंस है, तो करिकुलर इज लाइक जो मैंने रिसर्च पे वो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, करिकुलर जो पढ़ाई लिखाई से मिलता जुलता कुछ भी हो। जो मेजर प्रोजेक्ट्स माइनर प्रोजेक्ट्स ये हो गए, और यप। एक्स्ट्रा करिकुलर जो क्लब्स एंड कमिटीज हो गए. यप यप यप। थैंक यू सर. और सर मैं सोच रहा था सर कि 98.48, आई डोंट नो IIMs, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ DFS सर. कर दो सो यार। तो DFS के लिए मतलब जो इंटरव्यू है सर उसका, PI जो इस साल वो लेंगे, क्योंकि शायद लास्ट ईयर उन्होंने नहीं लिया था, बट इस साल वो लेंगे, और शायद GD भी होने वाला है सब कह रहे हाँ हैं दिल्ली हाँ। बुलाकर. तो सर उनके GD का टॉपिक भी तो, क्योंकि वो इतना हार्डकोर फाइनेंस ड्रिवन रेलम है पूरा, तो सब कुछ फाइनेंस के अराउंड ही होगा वहां तो. नॉट कंपलसरी। जीडी टॉपिक्स जेनेरिक ही होते हैं, टॉपिक्स ऐसे दिए जाते हैं सब कोई बोल पाए। टॉपिक ऐसा ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना दिया कि जो सर मुझे लोग पूरा पता ही स्टॉक नहीं मार्केट में है। सब पढ़ के जाना है. अगेन सॉरी। ऐसा तो नहीं है ना सर कि मुझे मतलब, सॉरी, फाइनेंस वगैरह पढ़ के जाना है. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई मतलब स्टॉक मार्केट और वैल्यूएशन और ये सब चीजें पता होनी चाहिए. जैसे आप एक्सएल जा रहे हो तो एचआर का कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, भले आप बीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो।
तो वही थिंग है कि अगर फाइनेंस गिवन कॉलेज है थोड़ा तो पता होना चाहिए, नॉट इन द डिटेल में नहीं कि सब कुछ आता है, पर हाँ ओवरव्यू होना चाहिए। और सर मुझे ना एक डर है बहुत ज्यादा अंदर से, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सर मुझे क्या हो रहा है ना सर अंदर से कि सर, क्योंकि जनरल जेम हूँ, वर्क एक्स अभी हुआ नहीं है वो, और मैं कॉलेज, लेट्स सपोज मुझे आईएम मिलता है, लेट्स से विशाखापट्टनम मिल गया या नागपुर मिल गया, दीज आर, आई विल नॉट से बेबी बट आई विल से न्यू जनरेशन आईएम से, हम्म। मैं वहां गया। सर वो मुझे ना समर प्लेसमेंट्स को लेकर अभी से डर हो रही है, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड 16 to 17 lakhs मेरे दिमाग में, मतलब मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर जीडी। ये जो करंट अफेयर वाला भी दिक्कत जो हुआ है ना सर, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ रोज न्यूज़पेपर आ रहा है मिनट, और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे सुबह उठते ये टेंशन होती है दिमाग में कि यार क्या करूं, जॉब भी एक्सटेंडेड है, जॉब के लिए दूसरी जगह अप्लाई कर देता हूँ, वर्क एक्स लेके 24 वाला कैट का अटेम्प्ट दे देंगे। बट फिर डर लगता है, कुछ कुछ दोस्त हैं जो मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट थे और उन्होंने, उनका कैट खराब हुआ है, तो वो डर अलग लग रहा है। तीसरी चीज ये हो रही है कि यार मतलब तीसरी चीज ये हो रही है सर कि वही जो सुबह उठता हूँ दिमाग में आता है कि समर प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, तो दिमाग में ये आता है क्या कि अच्छा कोई बात नहीं ना, वो मार्केटिंग ले लेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है, फ्रेशर है मार्केटिंग में घुस जाएंगे। फिर मैंने कहता है कि यार जिंदगी भर कंसल्टेंट बनना था तो मार्केटिंग क्यों करनी है। तो ये सारी चीजें, पागल हो रहा हूँ मैं, तो बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहा हूँ। तो सर मुझे समर प्लेसमेंट्स को लेके और ये सारी जो इश्यूज मेरे साथ हो रहे हैं, इसको कैसे टैकल करूँ, इफ यू कैन तो पुट जैसे सम समर लाइट। प्लेसमेंट का ये सीन होता है कि समर प्लेसमेंट यूजुअली फ्रेशर्स पहले जॉब मिलती है, समर्स मिलता है उनको फ्रेशर्स को, ये सारे आइम्स के थ्रू है। तो समर्स में उनको फ्रेशर चाहिए होते हैं ताकि जो पहली बार आ रहा हो काम करने और देख के सीख सके। तो फ्रेश पहली बात कि एसआईपी में समर्स प्रेफर्ड यार है, फ्रेशर्स प्रेफर्ड होते हैं, पहली थिंग। दूसरी बात, जैसे आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो जीडीपीआई के लिए, आपको वहां भी करना होगा प्रिपेयर, आप चाहते हो जल्दी प्लेस होना, क्योंकि वहां पूरी बैच साथ में लड़ती है फॉर वन कंपनी। तो और ऑलमोस्ट सारे लोगों का अभी प्रिपरेशन जीडीपीआई से खत्म हो जाएगा, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, नो वन विल फोकस ऑन जीडीपीआई एनीथिंग। सो आपको तब भी करनी है, ताकि जब जो अपॉर्चुनिटी आए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि इसको मैं ले सकता हूँ। बाकी समर्स में बहुत चीज़ लक पे होता है। मेरे बैच में काफ़ी ब्रिलियंट लोग हैं जो अभी तक अनप्लेस्ड बैठे हैं, और गिने चुने लोग ही हैं जो अनप्लेस्ड बैठे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हम कभी वैल्यू किए नहीं, उन्होंने हाईएस्ट पैकेज लिया है। तो समर्स में बहुत चीज़ें लक पे होती है। बी क्रू फॉर एनी कॉलेज, समर्स पे लक पे बहुत कुछ होता है। यू कांट जज योरसेल्फ ऑन समर्स कि यहाँ लगा है वहाँ लगा है एनीथिंग अगेन। और हाँ, समर्स इज अ एकेडमिक मैंडेट, तो समर्स आपका लगने ही वाला है। फ्री में करो, पैसे मिलेंगे बात की बात है, समर्स करना ही होता है। तो वो कॉलेज, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग जाएगा। और अगेन गाइस, एज अ फ्रेशर कुछ अपना ऐसा जोन मत रखो कि मार्केटिंग करनी है तो वही करना है, फाइनेंस करना वही करना है। फ्रेशर है भाई तो ओपन रहो कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल नहीं के सर, लिए वो जॉब मैंने करने के लिए। मतलब कहते हैं ना लोग कि ऑपरेशंस और फाइनेंस और ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ थोड़े 1-2 साल वर्क किए हुए लोगों को कंपनीज प्रीफर करती हैं, बट फाइनेंस मार्केटिंग में ऐसा नहीं, सेल्स में फाइनेंस में फ्रेशर्स अगर चाहिए। आपका एकेडमिक्स अच्छा है, कहीं ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, तो हाँ आपको वो एज तो अच्छा मिलेगा, है। एज मिलेगा। फाइन, ऐसा नहीं है, देखो सारी कंपनीज आती है, कुछ आएंगी जो फाइनेंस में होंगी ओनली फॉर फ्रेशर्स, कुछ होंगी ओनली फॉर वर्केक्स। ऐसा कुछ नहीं, इतना मत सोचो अभी, अभी के लिए चिल है। और सजेशन ये है भाई कि कॉलेज जो मिलता है अच्छा मिलता है ले लो यार। अगले साल किसने नहीं देखा है कितने मार्क्स आ रहे हैं क्या हो रहा है। डेफिनेटली सर, क्योंकि अगले साल तो और प्रेशर होगा चीज़ों को लेकर। भाई बहुत बच्चे हैं जो पिछले बार आईएम कोसी कॉलेज छोड़ के इस बार आईएमटी गए हैं, ग्लिम गए हैं, तो वैसा मत बोलो यार। देर आर पीपल लाइक दीज। देयर आर पीपल लाइक दिस, माय फ्रेंड ऑफ माइन, मेनी फ्रेंड ऑफ माइन, जो कोसी कॉलेज शिलोंग तक छोड़े थे कि नहीं एबीसी जाना है, और अभी भाई बस ग्लिम मिल जाए तो खुश हैं। आई हैव सेम फ्रेंड ऑफ माइन सर, ही मतलब उसने अपनी जॉब छोड़ दी एंड ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग भी पेट्रोलियम में ही काम कर रहा था। सर ही वाज डूइंग ग्रेट एट द मॉक्स ऑफ आईएमएस एंड ऑल। और सर इट इज अनबिलीवेबल दैट सर उसके टोटल मिला के 30 नंबर आ रहे हैं, सब कुछ दिस थिंग मिलाकर। हैपेंस, दैट्स एंड आई एम इट। शॉक्ड कि अब मतलब, और वो इतना टैलेंटेड ही आई से कि वो डिजर्व करता था, अहमदाबाद बैंगलोर तो कम से कम डिजर्व करता था उस परसेंटाइल पे, वर्क भी इतना अच्छा। लेकिन अब वो सोच रहा है कि SIBM जाऊं, CMHRD, ऐसा हो गया है उसके साथ सीन, तो वो तो डर मुझे भी लग रहा है कि ये बार बार परसेंटाइल्स नहीं आते। दिस इज थिंग, जो अच्छा बेस्ट मिलता है ले लो और इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ, हो जाएगा, नथिंग टू वरी। थैंक यू सर।